Assalamu alaikum guys, welcome back. This is your instructor Shafat Khan and we are back with the special NMDCAT series, and today I've got more questions for you guys, so let's get started. Let's get the practice on. Okay, so here we are, NMDCAT Rapid Revision Series Physics with Shafat Khan, and let's move on to our first question without wasting any more of our precious time. Okay, so there we are, our first question. Equations of kinetics are valid only when the acceleration is equation of kinetics basically acceleration movement को ही कहते हैं. So basically these are equations of motion का दूसरा नाम equations of kinetics ही है. ठीक है, तो ये की टर्म आपने याद रखना है. Kinetics आ गया तो कंफ्यूज मत होइएगा. तो कब अप्लाई होती है equations of motions? I hope you guys remember what equations of motions are. S is equals to ut plus half at squared and all those. Well, ये बहुत ज़्यादा important है. फिर इसके बाद v is equals to u plus at भी बहुत ज़्यादा important है. And then we also have v squared equals u squared plus 2as, which is also very important. We also have one more equation, s is equals to v plus u upon 2 bracketed into time, and this is also very important. These four equations are very important, so I hope you guys have learned all of them by now. Okay, so these equations are only and only applied when the acceleration is zero or constant. Okay, sorry about that. Okay, when the acceleration is constant, only then will we apply these equations. So C is our answer. And such a motion on which these equations are applied is called a uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. ठीक है? Why uniformly accelerated motion? Because acceleration आपका क्या है? Uniform है. Uniform का क्या मतलब? Uniform का मतलब भी constant ही है. ठीक है? Let's move on to the next question. Okay. Let me move my picture down here. Okay. In the photoelectric effect, a photon of energy, h mu, yeah, h into frequency, is incident on the metal surface. Now, the energy required to eject the valence electron from the surface of the metal is expressed as, okay, so basically, अब और से क्वेश्चन को देखिए. इन्होंने कहा है कि एक फोटोन है, ठीक है, फोटोन की एनर्जी भी गिवन है. एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, E is equals to hf होता है, या f को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एक ही बात है. अब ये फोटोन की एनर्जी है. इन्होंने पूछा क्या है? It is incident on the metal surface. Metal surface पे आपने उसे इंसिडेंट करा दिया. And the energy which is required to eject the valence electron from the surface of the metal, वो एनर्जी जो कि मेटल के क्लीन मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराए, वो बाय डेफिनेशन कौन सी एनर्जी होती है? वर्क फंक्शन एनर्जी, राइट? वर्क फंक्शन एनर्जी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क फंक्शन एनर्जी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लीन मेटल सरफेस, टू इजेक्ट इट फ्रॉम द क्लीन मेटल सरफेस. एंड बाय द वे, इस वक्त ये वाली जो एनर्जी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से रिमूव कराने के काम आती है. ठीक है, ये वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं होती. ठीक है, दिस इज ओनली रिक्वायर्ड. एंड इसको एक और टर्म से भी हम जानते हैं कि दिस इज द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कॉज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं? द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लीन मेटल सरफेस, राइट? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, so this is not the energy which is used in increasing the speed, but rather this is the only energy which is required to emit the electrons from the metal surface. So work function energy is the answer, work function of the metal. And moving on to the next, when an electron and its anti, अच्छा ये positron नहीं है, ये anti-particle है. ठीक है, इसको ठीक कर दे. When an electron and its anti-particle come close enough to each other, they completely convert into radiation in the form of photons. This process is called, ये आपने बुक में पढ़ा होगा कि जब आपके पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा हो और वहां से एक पॉजिट्रॉन आ रहा हो, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन का वो एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ दोनों आ रहे हो. ठीक है, तो फिर एक फोटोन निकलता है, राइट? उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? इन दोनों के सम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, राइट? एक फोटोन की, मतलब जब फोटोन रिमूव होता है, रिलीज होता है, तो फोटोन क्या है? फोटोन इज एनर्जी. फोटोन एनर्जी हुई ना? इट इज अ पार्टिकल, बट पार्टिकल ऑफ एनर्जी. एंड ये वाले जो दो हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये दोनों मैटर थे. सो मैटर गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. दिस इज कॉल्ड annihilation of matter. Option C is the correct answer.
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी होगा बुक में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, अच्छा ये ZXA लिखा हुआ है, ठीक है। Z आपको पता है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन नंबर, X इज अ सिंबल एंड A इज द न्यूक्लियन नंबर, मतलब टोटल रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है A। नाउ बीटा एमिशन अकर्स, अच्छा बीटा एमिशन, जब बीटा सिर्फ बीटा कहा हुआ है तो इसका मतलब है बीटा नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। अगर बीटा पॉजिटिव एग्जामिनर कह रहा होता तो दे वुड हैव स्पेसिफाइड, since they haven't specified, so they are talking about the beta negative particle. Beta negative emission takes place along with the daughter nucleus. Okay, so from this nucleus, this is the parent, you remove out a beta particle along with some daughter nucleus. Let's say that daughter nucleus is Y. Because of this beta emission, the mass number A of the parent nucleus, what happens to the mass number? Okay, first of all, what's the mass of beta? It's 0. And what's the proton number? It's -1. राइट, मास नंबर क्या है, 0 है। अगर मास नंबर 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि x के मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया, मास नंबर विल स्टे द सेम, ठीक है। वो प्रोटॉन नंबर में चेंज आ जाएगा, ये Z+1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 उससे रिमूव हो गया, तो ये Z+1 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज नो चेंज इन प्रोटॉन नंबर, सो रिमेन्स कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। दे आर आस्किंग व्हाट हैपेंस टू द mass number over here. Moving on to the next question. In simple harmonic motion, a particle is oscillating in such a way that its total energy remains conserved. ठीक है, ये statement दे दी आपको, and yes, of course, its total energy remains conserved. When this particle reaches its two extreme positions, its potential energy at the extreme positions become, अच्छा extreme positions पे potential energy के साथ क्या होता है? Well, हम assume करते हैं ये एक pendulum है, ठीक है, and pendulum simple harmonic motion perform कर रहा है। ये mean position पे था, ये चला जाता है extreme position पर, फिर वापस मीन पे आ जाता है, फिर एक्सट्रीम पे चला जाता है, फिर वापस मीन पे आ जाता है। अब लेट्स से ये दो आपके एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है, थोड़े से इधर उधर बन गए हैं, लेकिन आप अज्यूम कर लें कि दीज आर द टू एक्सट्रीम पोजीशंस। तो आप बताएं एक्सट्रीम पोजीशंस पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा। मीन पोजीशन पे आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम and potential energy is 0. At the extreme positions, it's the potential energy that's maximum and kinetic energy is 0. Why is the kinetic energy 0? Because its velocity has become 0. It has momentarily come to rest, right? So potential energy is going to be maximum at the two positions, two extreme positions. Moving on to the next. In electric circuits, a PN junction diode is used to convert the alternating current into direct current. अच्छा, AC to DC conversion, इसे क्या कहते हैं? AC to DC conversion को rectification कहते हैं. Remember? Rectification. हाफ वेव होती है, दूसरी फुल वेव होती है, आपको याद होगा। दिस प्रोसेस, अच्छा रेक्टिफिकेशन ही पूछा हुआ है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द प्रोसेस इन व्हिच लाइट बेंड्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड, अच्छा बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल इनटू ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या था? डिफ्रैक्शन था, राइट, ये डेफिनेशन थी डिफ्रैक्शन की। नाउ द एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स, एटॉमिक नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? Number of protons, yes, that's the answer. The number of protons are directly equal to the atomic number. आप किसी भी एलिमेंट को देखेंगे, उसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन नंबर होगा। किसी भी आयन को देखेंगे, उसका जो भी प्रोटॉन नंबर होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। किसी भी आयन या एटम या किसी भी पार्टिकल को देखेंगे तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका प्रोटॉन नंबर होगा, ठीक है। आयन या एटम किसी भी, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो नेगेटिव आयन हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, आयन्स में चेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइट वैरी, दे माइट बी द सेम एज द एटॉमिक नंबर और दे माइट बी डिफरेंट। एंड देन सम, नो द सम इज आल्सो डिफरेंट, इट्स द न्यूक्लियन नंबर। सम जो है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मास को, नॉट द एटॉमिक नंबर को, ठीक है। So option A is your correct answer. Moving on to the next. If a car collides with a housefly, okay, ठीक है, housefly छोटी सी मक्खी के साथ जब एक कार collide करेगी, तो what will be the magnitude of the force experienced by the housefly? Much greater than, अच्छा guys, Newton's third law तो याद होगा। Although ये एक housefly है, बहुत छोटी सी मक्खी है, और एक बड़ी gigantic car है as compared to the housefly, but forces exerted by the car on the housefly and the force exerted by the housefly on the car are going to be equal according to Newton's third law of motion. Okay, so they are going to be the same. They're not going to be different regardless of their size. Moving on to the next. There are different types of waves that exist in this universe. Which type of waves do not need any material medium? Acha, waves
not requiring medium, उन्हें हम क्या कहते हैं? Non-mechanical waves कहते हैं, right? Non-mechanical. And electromagnetic waves की ये property होती है कि they are non-mechanical waves in nature. Okay, so option C is the correct answer. Now, in free states, the mass of the nucleus is always, अच्छा, एक nucleus का mass, is it greater than the mass of its constituents, equal to the mass of its constituents, less than the mass of its constituents, or far greater than the mass of its constituents? Mass defect का concept आपको याद होगा. Mass defect. E is equals to mc squared हम लगाते थे. Change in E is equals to change in M multiplied by C squared. Change in E था energy, change in M था mass defect, and C squared, C जो है ये velocity of light को represent कर रहा है, right? 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second. अच्छा, so basically जब एक let's say हमारे पास दो protons हैं और दो neutrons हैं, अगर ये free state में है तो इनका कुछ certain mass होगा, let's say m1, but ये दोनों जब combine होंगे और एक nucleus की form में आएंगे ना, तो इनको कुछ ना कुछ मास जो है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करनी होगी ताकि ये स्टेबल हो जाए एक दूसरे के साथ, ठीक है? फॉर स्टेबिलिटी सम एनर्जी नीड्स टू बी ऑलवेज रिमूव्ड. ओके, फॉर स्टेबिलिटी सम एनर्जी हैज टू बी रिमूव्ड. एंड वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? It's the same as this energy in this equation, and this energy comes from the mass. So therefore, the protons and the neutrons, they lose certain amount of their mass, and they convert that mass into energy, and that energy is called the binding energy. Yeah, the binding energy, binding energy. And this binding energy is necessary for the stability of the nucleus. Okay, the nucleus itself has a lesser mass as compared to the constituents, lesser mass than its constituents. And reason uska yahi hai ke because it loses some of its mass in the form of binding energy. ठीक है, तो it's going to be less than the mass of its constituents. Constituents का free state में जो भी total mass होगा ना, वो nucleus से ज्यादा होगा. जब वो nucleus के अंदर दो proton और दो neutrons आ जाएंगे ना, तो इनका mass कुछ थोड़ा सा कम हो गया होगा. आगे चलते हैं. Now, if constant current is flowing through a coil, then flux through the coil will be constant. ठीक है, इन्होंने कह दिया कि अगर करंट कांस्टेंट है किसी कॉइल में, आपके पास लेट्स से ये आपके पास ये कॉइल है, ठीक है, इसके थ्रू आप कुछ कोई कांस्टेंट करंट, मतलब एक डीसी करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से ये किसी बैटरी के साथ लगा हुआ है. इफ डीसी करंट इज फ्लोइंग, तो द फ्लक्स थ्रू इट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फील्ड लाइंस, वो भी कांस्टेंट होगी, राइट? न्यूटन फैराडेज लॉ क्या कहता है? Rate of change of magnetic flux linkage is proportional to the EMF induced in that conductor, right? EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. अगर current constant होगा, तो क्या कोई change आएगा flux में? नहीं आएगा, क्योंकि flux भी constant हो जाएगा. और अगर flux constant होगा, तो EMF क्या हो जाएगा? Zero. This is only possible for constant current. बट अगर आप करंट को कम ज्यादा करते रहें, मतलब इस सप्लाई को वेरिएबल बना लें, तो फिर ये फ्लक्स की स्ट्रेंथ जो होगी वो भी कम ज्यादा होने लग जाएगी, और फिर यहाँ हम कह सकेंगे कि देयर इज चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू व्हिच देयर इज अ EMF induced. So in such type of arrangement, the EMF induced in the coil will be zero. ठीक है, because the current is constant, the flux is constant, therefore the EMF induced is going to be zero according to Faraday's law. Faraday's law. Moving on to the next. Okay, in the electromagnetic spectrum of radiations, the wavelength spectrum that is visible to human eyes, 400 to 700 nanometer. Well, to be more specific, it's 400 to 750 nanometers, but 400 to 700 nanometers is fine. This is the visible spectrum. Okay, 400 being the wavelength of red light. No. 400 being the wavelength of violet, and 700 being the wavelength of red light. Clear? Moving on to the next. Okay. Which process is shown in the graph between the pressure and volume? Okay, so let's look at it. The volume is constant, right? The volume is not changing, but the pressure is changing. Volume is constant, but pressure is changing. Such a process in which the volume stays constant is called isochoric process.
Option C is the correct answer. Moving on to the next. If in a circuit 2 amperes current is drawn from the battery in 10 minutes, how much charge will flow through the circuit in that time? Charge का क्या formula है? Q is equals to IT. अच्छा, बट यहाँ एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपने सेकंड्स में to keep them in SI unit. Current is 2 and time is 10, but it's in minutes, so multiplied by 60. So now you've got it in seconds. So 60 times 10 is 600, times 2 is 1200 coulombs. That's your answer. Option A is the correct answer. Moving on to the next. If the sunlight is incident on the photocell, the number of electrons emitted from the surface of the cell increases with the... Okay, they're asking us, if you guys remember a photocell. Well, photocell में कुछ नहीं होता, वही photoelectric effect की एप्लीकेशन है, ठीक है. एक तरफ एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, दूसरी तरफ एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, and they are connected to, let's say, some sort of a device. Let's say this is a galvanometer to which they are connected, and on one of the two electrodes some light is incident, ठीक है. अब आपने लाइट को इंसिडेंट करा दिया. अब ये पूछ आपसे ये रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट हो जाएंगे यहाँ पर, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बिकॉज दे हैव बीन एमिटेड थ्रू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ये बताएं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are emitted from the surface, how will they increase? नंबर उनका कैसे इंक्रीज होगा? अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको याद है कि मतलब फोटॉन्स, जो इनकमिंग फोटॉन्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनका नंबर नहीं बढ़ेगा. बट इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द फोटॉन्स, इफ द इंटेंसिटी इज raised, the intensity is raised, that means the number of incoming photons have increased. The number of incoming photons जो होंगे, that will rise. And if the number increases, then that means the number of electrons would increase. Number of electrons would increase, because you could think of it this way: each photon will kick out each electron. So one photon will kick out one electron. So the greater the photons, the greater the electrons emitted. So increase in intensity would be the answer, option B. And let's move on to the next one. The process of natural decay of the... Okay, the process of natural decay of some heavy nuclide is because of the phenomenon... Okay, natural decay bola hai, theek hai. We've talked about natural decay, not the artificial one. Nuclear fission tab hota hai jab wo artificial decay jo hamare nuclear reactors mein hota hai, wo fission hota. तो न्यूक्लियर फिजन तो यहीं से कट गया. फ्यूजन भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूजन होता है सन पर, यहाँ नहीं कर सकते. नेचुरली डिके नहीं होता, वो फ्यूजन में दो न्यूक्लियाई कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से मैसिव एनर्जीज रिलीज होती है, और वो सन पे होता है, ठीक है. मेनली emission spectrum, well, no, not the emission spectrum, because देखें, process of natural decay का क्या मतलब है? An unstable nucleus being converting into a more stable one by emission of radioactivity, by emission of radioactive emissions, radioactive radiations. Radioactivity ही आपका आंसर होगा बेस्ट, क्योंकि वही आपका नेचुरली प्रोसेस होता है, ठीक है. तो हैवी न्यूक्लियस को आपने लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना है नेचुरली, तो वो सिर्फ रेडियो एक्टिविटी की वजह से कर सकता है, ठीक है. फिजन की वजह से नहीं, बिकॉज वो आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल नहीं होता. फ्यूजन नहीं, बिकॉज वो नॉर्मल कंडीशंस में हो नहीं सकता. एंड emission spectra भी नहीं, ठीक है. Now let X be the radioactive element having N naught nuclei, ठीक है. ये N naught इसके nuclei है. Now the time required to decay this type of element to 1/2 of its initial number is known as, ठीक है. इस नंबर को आपने 1/2 of its number में कन्वर्ट करना है, तो उसमें जो टाइम लगेगा उसे हम क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिव हाफ लाइफ. रिमेंबर, हाफ लाइफ कहते हैं. That's the answer. Now bimetallic thermostat is an example of thermostat. याद है, bimetallic strip होती है, एक मेटल से बनी हुई होती है और दूसरे मेटल से बनी हुई होती है. ये दो मेटल्स की एक स्ट्रिप होती है, और उसको जब हम हीट करते हैं तो उसकी लेंथ चेंज होती है, राइट. तो ये थर्मल एक्सपेंशन की ही एग्जांपल है. Let's move on to the next one. A cyclist moving towards the right with an acceleration of 4 meters per second squared. At time 0, he has traveled, sorry about that. He has traveled 5 meters towards the right at 15 meters per second. What will be his positions at t equals to 2 seconds? Okay. You've got a cyclist who is moving towards the right with a certain acceleration. So
moving to the right. His acceleration is 4 meters per second squared, right? Now, at time 0, he has already traveled 5 meters. Okay, they told us that he has already traveled a certain distance. Like after traveling 5 meters distance, over here at this particular point, this is where we are starting out the time from. Okay, now he's moving to the right with 15 meters per second speed. At this point, his speed is how much? 15 meters per second. What will be his position after 2 seconds? Okay, so if the time is 2, according to this time, okay, if 2 seconds have passed, what will be his final position? Position means it's his displacement, okay? They're asking about displacement. And if they're asking about displacement, displacement is always from the initial starting point, okay? So it's gonna be some from here all the way till here. ठीक है, ये पूरा का पूरा length जो है ये आपका displacement होगा. तो अब ये कैसे कैलकुलेट करें? वेल इजी है, आपने बस सिर्फ ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर देना है और उसमें 5 को ऐड कर देना है, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए. तो लेट्स यूज द फॉर्मूला S is equals to ut plus half at squared. ठीक है, ये फॉर्मूला मैं लगा दूं. u आपके पास 15 दिया हुआ है, टाइम आपके पास 2 सेकंड्स दिया हुआ है, प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 4 इनटू टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम वही 2 दिया हुआ है, 2 स्क्वायर. ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 4 8 को ऐड कर दिया आपने 30 के साथ, एंड 38 मीटर्स ये आ गया. बट 38 मीटर्स इज नॉट योर आंसर, क्योंकि ये सिर्फ इसका डिस्टेंस आया है. 38 प्लस 5 कितना हो गया भाई? 43 हो गया. 43 मीटर्स आपका आंसर है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Now moving on to the next. Two forces equal in magnitude but opposite in direction, not acting along the same line of action or constitute a couple force. The movement of this couple will be, okay, if you've got two forces which are, for instance, ये आपके पास एक डंडा है, ठीक है, एक प्लैंक है, एंड इस प्लैंक पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, दूसरी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, एंड दे आर पर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो ये ऑफ कोर्स ये आपकी कपल फोर्स हो गई, क्योंकि ये वाली जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, ये वाली भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, एंड इन दोनों का मोमेंट्स ऐड हो जाएगा. ठीक है, जब भी इस टाइप की कपल फोर्सेस होती हैं तो उनका मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस फोर्स बाय दैट डिस्टेंस, राइट, एंड वी गेट द टॉर्क ऑफ दिस कपल. तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो सेंट्रल पोजीशन है वो कुछ भी हो, हमें बस सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, राइट. तो इसलिए this torque is actually independent of the central position, so it is independent of the location of the origin. Option B is the correct answer. Okay, going on to the next. If we increase the area of cross section of a conductor having a length L, the resistance of that conductor will be, well, resistance का formula क्या है? R is equals to rho L upon A. And now they're asking us that if this cross-sectional area is increased, then of course the resistance has to decrease, because they are inversely related. They are inversely proportional. देखें ये denominator में है, ये ऊपर है, ठीक है? It will be decreasing, not increasing. Moving on to the next. If constant temperature conditions are applied to a gas container, then the volume of the mass of that gas tends to increase by, okay, how will the volume increase if the temperature is constant? Well, pressure and volume relationship आपको Boyle's law से अच्छे से याद होगा कि isothermal conditions में pressure और volume inversely related होते हैं. Isothermal मतलब temperature staying constant. So if you want to, if the what are they saying? Then the volume of the gas, of the mass of that gas tends to increase by, if you want to increase the volume, you have to decrease the pressure. So decrease the pressure which is applied. Option A is the correct answer. Now let B be the magnetic field, and a conductor of length L is moved across the field. Okay, due to this activity, a potential difference appears across the ends of the conductor. This type of potential difference is termed as, okay, let's assume आपके पास एक magnetic field है, ठीक है, ये वाली, and इस magnetic field में आपने एक conductor को move कराया, ठीक है, क्या होगा? वेल अगर आप एक कंडक्टर को मूव कराएं किसी वेलोसिटी के साथ v के साथ, तो क्या होगा? इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वही आपको क्वेश्चन की वर्डिंग में बताया हुआ है. तो ये मोशनल ईएमएफ इसे कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने मूवमेंट की वजह से जो है इसके अंदर एक कांस्टेंट लेंथ, लेट्स से इसकी लेंथ L है और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B है, तो इस कंडक्टर के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेल ईएमएफ इज इक्वल्स टू VBL sin थीटा या BVL के फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, राइट. इसे इमोशनल ईएमएफ कहेंगे.
motional EMF is your answer. C. Which of the following phenomena represents the wave nature of light? Well, wave nature कैसे क्या कौन सा represent कर रहा है? Let's see. Photoelectric effect, particle nature, Compton's effect, again particle nature. Interference of light is the wave nature. Pair production against particle nature. Say option C is the correct answer. And that's all for this lecture, guys. I hope you've enjoyed it. And guys, कोई भी question हो, feel free to comment it down in the comment box. And apart from that, see you next time. Take care till then, and Allah Hafiz.